So before we start this particular session, I would like to give you a little bit of my experience about this book in general. Uh, all of you might be, a little bit more 5 years, 10 years. Similarly, I am for more than 20 years. And the one word which I really think that it should be omitted from the dictionary is intelligence. Intelligence is one of the words which has really created a lot of difficulty in society. And why I believe so? Because I have never seen any person who is not intelligent. Means all of you sitting in this particular classroom, everyone is intelligent. There is hardly, anybody will say that I'm not intelligent. I don't see that anybody is going to lift their hand and say that I'm not intelligent. Similarly, say for example, even if I compare myself from a cardiologist who is able to operate, I will feel like I'm not intelligent. He knows how to do the cardiac surgery, I don't. But if that's a different comparison, it's not a right comparison. If I go to a say, for example, Palika Bazaar, I feel like I'm told that I have bought this item of 100 rupees for 1,000. The person who's vendor over there is able to make food. So sometimes I think I'm not intelligent. That is not true. Actually, this intelligence word should be replaced by skill. All of us are skilled person. Somebody might be having a skill in one particular area, others might be having a skill in other particular area. So rather than using the word of intelligence, it is a skill which is a category word which should be replaced everywhere in the books. And similarly, you see classroom of around 30 students. 5 students will be that they are more motivated to study. Next 10 students will be those who will be forced to study because their parents are putting a lot of pressure on them. And rest of the students, they are coming to the class, no matter how much effort you are making, whether the parents are making or whether the teachers are making, they are not going to study. Because they have interest in other areas. Maybe they are interested in sports, they are more interested in something else. So no matter what is the effort that you put for the study, ultimately they are not going to study and they will वो ऐसा ही कोशिश करेंगे कि एक्चुअली नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा अब जनरल पेपर को अगर हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर नहीं पढ़ा वो ना कोई लड़का है ना करें तो बेटर है जिस बच्चे जो स्किल है हम उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर है तो इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा करेंगे कि एक्चुअली बच्चों को जिसको एडीएचडी है या किसी को कुछ ऐसा है कि किसी को कुछ एडीएचडी है उन बच्चों को अलग तरीके से अगर उस क्लास में से बाहर निकाल दें तो उनको लगेगा कि they will feel isolated from the society. And because जैसे आपने कल से सीख रहे हैं कि हमारा जो लर्निंग होती है इमोशनल भी करें एंड सोशल भी करें so when they remain in the same social environment they are going to learn a lot of things but अगर आप उन बच्चों को थोड़ा सा उस environment से exclude कर देंगे तो हो सकता है आप essentially नहीं सीख पाते और बच्चा अपने कैलिबर के हिसाब से कुछ ना कुछ सीख देगा एज अ टीचर इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस identify the true hidden quality of the child, focus on it, and develop those skills which the child is capable of. I don't know if you have this dirty rods comes now. Dirty rods comes 20 वो हवा में उड़ती हुई बॉल को मतलब 1 सेकंड के अंदर पकड़ लेता था और मैंने देखा कि जैसे जो ट्रेनर्स वो नहीं कर पाते तो आखिर उसके पास ऐसा कौन सा टैलेंट एक्चुअली वो समझ सकता है चेंज ऑफ एडल्ट रेडिएशन his hyperactivity is so much that it's so best that he can able to do all those things. तो हमारे को बच्चे के लिए भी फोकस करना चाहिए rather than intelligence, which is a very good way of dividing the society. उसका एक रीजन और भी है मैंने ये भी देखा कि इंटेलिजेंस चेक करने के पैरामीटर्स बता रखे हैं जो स्केल बना रखे हैं आप किसी बच्चे ने उनकी पहली बार स्केल में एक बच्चा होता है एक वेरी गुड एग्जामिनेशन वो फटाफट कर देगा हो सकता है उसका स्कोर आ जाए दूसरा बच्चा देखिएगा ये टेस्ट आके पता नहीं इसमें मैं सही लिखा होगा नहीं लिखा होगा टेंशन हो गया मुझे 70 लाना चाहिए था वो पता चला 45 से करके आया और आप उसी बच्चे को 200 प्रैक्टिस कराओगे वो भी सकता है उसको 200 लेकर के आया
ये जो टेस्ट है ये बहुत ही कूल वे और उन्होंने सेटिंग है कि आपको पहली बार आपने कर दिया और क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपको पढ़ाई के बाद अगर कोई टेस्ट आपने कर दिया उसको 3 दिन तक परफॉर्म नहीं करेगा। Everybody is not made to appear in a test. टीचर को हम बच्चों को जैसे निकाल आइडेंटिफाई करना है और उनके स्किल्स के ऊपर डेवलप करना है टेंशन होता है दैट्स द बिगेस्ट अप्रोच rather than कि सभी को मार्क लगा करके पर्सन डॉक्टर या इंजीनियर या इंजीनियरिंग बनाना है that intelligence virtually is related from that इस बार इंडिया में ऐसे नहीं समझ कुछ हमारे और जो डिजीजेस हैं इनके विचार में भी है क्वेश्चंस रिलेटेड टू these topics. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्यादा कंफर्टेबल कर रहूंगी जब मैं प्रोनाउंस करती हूँ। मुझे बैठने में बहुत एप्रीहेंशन होता है। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग मेरा फोर्टे नहीं है, बट स्पीकिंग फ्रॉम द हार्ट इज माय फोर्टे एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माय जॉब इज। आई वर्क फॉर लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम पंकज सामा है। मैं पिछले 10 साल से नोएडा के कुछ बहुत अच्छे स्कूल से कनेक्टेड हूँ। ये दिस इज जस्ट प्लेन फॉर्च्यून। पता नहीं इसमें मेरा स्किल कितना है, बट फॉर्च्यून का एक या लक का एक फैक्टर जरूर है। सो आई लाइक टू एक्नॉलेज दैट। मैंने बहुत अच्छे स्कूल्स के साथ काम किया। स्टेप बाय स्टेप इनमें से एक है, पाथवेज वर्ल्ड स्कूल इनमें से एक है। और मैं पिछले 6 साल से लोटस वैली से कनेक्टेड हूँ, जहाँ पे मैंने स्कूल के डिपार्टमेंट के साथ ग्रो किया है। हमारा एक बहुत ही स्पेशल डिपार्टमेंट है, जो स्पेशल नीड्स डिपार्टमेंट है। नाम से स्पेशल है। और फ्रॉम अ फैकल्टी स्ट्रेंथ ऑफ 250 टीचर्स एंड 4500 स्टूडेंट्स, कम से कम मतलब 4500 बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है। 4416 is what I checked last on the website. So I am representing 4416 students and proud 250 teachers and 95 support staff members. एंड मैं उनके बिहाफ पे एक छोटी सी चीज प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जो मैंने एक वीडियो के फॉर्म में बनाई है। और बहुत मेहनत गई है हमारी हेड ऑफ स्पेशल नीड्स से और हमारे सारे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, काउंसलिंग डिपार्टमेंट से। और सबसे ज्यादा जो आई थिंक जिस पर्सन जो पोस्ट ग्रेजुएट है इन सबके पीछे, आप उनसे कल मिले थे डॉक्टर रुचि से, who is an institution in herself. Her experience as a PhD in psychology is evident when she speaks and is the constant driving force that motivates us to do whatever little we can in our own capacity. And ऐसी छोटी छोटी चीजें मिला के छोटे छोटे से हम लोग मिलकर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाते हैं लोटस वैली। उसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, हमने उसका नाम रखा है CLE। आप एक बार CLE बोलिए, CLE। आपके होठों पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है। ट्राई कीजिए दोबारा। It's called Center for Learning Enhancement, and we are celebrating the 6th ongoing year, which is my 6th year in the school as well. So this department is as old as I am in the school, and old young कह लो, कुछ भी छोटा मोटा काम करने की हमने कोशिश करी है। एंड जैसे आपके फोटो पे एक स्माइल आई थी CLE बोल के, हम यही हमारा मोटिव है कि हम अपने बच्चों की लाइफ में भी थोड़ी सी स्माइल्स लेके आए। किस तरीके से हम छोटा छोटा काम करके उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उस अल्टीमेट गोल के लिए कि वो अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन पाए, हमारी सोसाइटी के वैल्यूड सिटीजन्स बन पाए, अपने लिए कुछ कर पाए। हमारे लिए नहीं, शायद वो अपने लिए कुछ करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी एनकरेजमेंट होगी। सो हमने छोटी सी वीडियो के फॉर्म में, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, छोटी सी वीडियो जो है वो दिखाऊंगी। अपने स्कूल का एक छोटा सा टूर कराऊंगी, वर्चुअल टूर। I would like to request all the lights to be dimmed so that the visibility is perfect. You will also get to see, आप देखेंगे किस तरीके से हमने एक डिपार्टमेंट के फॉर्म में हमारे पास almost 100 to 150 बच्चे enrolled हैं, with about 25 special educators and 3 occupational therapists. We are really trying hard to get 1 more speech therapist on board, and to make our department fulfilling and holistic in its nature. We have full impetus given in terms of sports. स्पोर्ट्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाती है। उनमें से एक अपॉर्चुनिटी डॉक्टर देसाई आपको मौका मिला था
आप आए थे हमारे घर में। हमारा छोटा सा मतलब ये कह लो, इट वाज जस्ट अ हाउस ऑफ होप दैट वी ट्राइड टू क्रिएट। आई होप यू हैड अ गुड एक्सपीरियंस देयर। हम उसको एक आशा का आशियाना भी कह सकते हैं, छोटा सा घर जहाँ पे होप दी जाती है, जहाँ पे उम्मीद दी जाती है। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए। किस तरीके से स्पेशल एजुकेटर्स ने ऐसे लर्निंग जोन्स बनाए हुए हैं जो स्टिमुलेटिंग है उन बच्चों के लिए जिनको स्टिमुलस चाहिए, और जो नो स्टिमुलस जोन है जिनको हमें स्टिमुलस नहीं देना है। तो लर्निंग उस तरीके से डिफरेंशिएट की जाती है, सब बच्चों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, क्लास के अंदर बैठे बैठे, क्लास के बाहर, प्लेग्राउंड में, हर तरीके से। तो मैं और उसके ऊपर एक और डोम बनाया गया है विच इज काउंसलिंग, जो कि ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बहुत रिगरसली काम करते हैं हम। और ताकि हर बच्चे को हर बच्चे का अल्टीमेट एम जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट का, ना ही से स्किल मिले बट वो खुश घर जाए, अपने पॉकेट्स फुल घर जाए। सो अब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज मेरे स्कूल का एक छोटा सा टूर लीजिए। थैंक यू सर।
ये हमारे बच्चों में बहुत स्पेशल मैसेजेस हैं। I actually I want to Dancing, and I want to become a footballer. हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना चाहते हैं और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड एनकम्पस हर डोमेन से कुछ कुछ चीजें पिक करके एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट देना कि एक चीज जो हम जो बहुत स्पेशल तरीके से अपने आप को मार्केट करते हैं वो ये है कि हम आईक्यू पे इतना काम नहीं करते जितना हम इंक्यू और एचक्यू पे काम करते हैं। आप बताना चाहेंगे ये पीक्यू या एचक्यू क्या है? परफॉर्मेंस तो बहुत सीरियस होता है, वो तो मुझे अभी प्रेशर हो रहा है उसका। बड़ी बात है, छोटी बात है, बहुत छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, इनको छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिलती है। क्वेश्चन पे काम करते हैं हम खुद भी अपने आप से भी we never let the inner child get compromised। हमेशा इस मोटिव से काम करते हैं कि बच्चों के साथ हमेशा बच्चे बन के काम करते रहना। किसके लिए? सिर्फ एचक्यू के लिए, हैप्पीनेस क्वोशिएंट के लिए। और उसी में ही हमारे सारे 8 घंटे जाते हैं ताकि हम बच्चों जिस तरीके से आपने देखा हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश करी इन टर्म्स ऑफ इंटर स्कूल इवेंट्स हम खुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं। और जहाँ किसी स्कूल में बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है, स्पेशली बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे वो अपने स्केल को डिस्प्ले कर पाए, तो हम बच्चों को तैयार कराते हैं और बच्चे जिस तरीके से खुश वापस आते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट जब आप एजुकेशन सेक्टर में होंगे आपकी सैलरी कभी इतनी ज्यादा नहीं होती, बट इस तरीके से आपकी अर्निंग्स होती है जब बच्चा कोई मेडल लेके आता है या बच्चा कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके आता है। तो यही हमारी तरफ से कोशिश है। अगर इसके ऊपर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। स्पेसिफिक दैट यू वांट टू नो प्लीज लेट मी। It is fully inclusive. So, and it is also need based। हमारे पास कुछ क्लिपिंग्स अगर आपने देखी होंगी तो उसमें भी आपने देखा होगा कि क्लास के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर बैठा हुआ है और वो एक मीडियम की तरह काम करता है। पेस कब स्लो करनी है
जो कंटेंट आ रहा है टीचर की तरफ से, क्योंकि हाँ एट द एंड ऑफ इट आप में से कोई भी अगर एक मेन स्ट्रीम क्लासरूम में पढ़ा चुका है तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा हमारे पास वर्निंग यही होता है कि मैं एक हूँ और मुझे 50 को रीच आउट करना है, पर उन 50 में कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी लर्निंग पेस बहुत डिफरेंट होगी। वो हमने अभी डॉक्टर पूजा के सेमिनार में सुना था कि एक छोटा सा कंपोनेंट भी अगर मिसिंग हो या अपना काम ठीक से ना कर रहा हो तो वो कैसे कैसे प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट करता है, और वो एक टीचर जो 50 बच्चों को केटर कर रही है उसके लिए वो एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन कितनी मुश्किल हो जाती है मैनेज करनी। तो इसी रीजन से वी हैव गॉट स्पेशल एजुकेटर्स प्लेस्ड इन द क्लासरूम सपोर्ट के लिए along with the teacher who is teaching। जैसे अगर फिजिक्स की क्लास चल रही है, साइंस की क्लास चल रही है, तो एक स्पेशल एजुकेटर क्लास में होगा जो कि एक मीडियम की तरह काम करेगा। उन कॉन्सेप्ट्स को अगर हो सकता है किसी कॉन्क्रीट वे में सिखाने की जरूरत है बच्चों को तो वो उस टाइम कर दिया जाता है क्लास में देर एंड देन। एक इन क्लासरूम सपोर्ट है, और साथ ही साथ हमारे कुछ रिमेडियल प्लस हम उसे रिमेडियल क्लासेस भी बोलते हैं, उसे सपोर्ट क्लास भी बोलते हैं। सपोर्ट ज्यादा अच्छा हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर में इंटरनेशनल स्कूल में वर्ड्स का बहुत ध्यान रखा जाता है कि आप किस तरीके से, जैसे हम बात करें कि ये ऑटिस्टिक है या हम बात करें ये एक पर्सन है विद ऑटिज्म, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। हम पर्सन को प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस नहीं कराते कभी भी, दोनों को ये दो सेपरेट एंटिटीज हैं। तो a person is never the problem is the problem, so this is the principle at which we work। and ये बहुत छोटी सी बात है, पर अगर आप हर अपना केस इस तरीके से देखोगे तो आप बच्चे की लाइफ में बहुत डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, आपकी अपनी स्ट्रैटेजीज बहुत चेंज हो जाएगी अगर आप सिर्फ एक वर्ड का ध्यान देंगे। एनी अदर स्पेसिफिक क्वेश्चन? We'll take. I think we'll take. Yeah. Take. तो मैं ना आपको बहुत कमाल लेकर से देखिए उनकी बातचीत भी नहीं है, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं आप, पैशन से कर रहे हैं। पर जो हमारा आपको बताइए एक्टिविटी बहुत तो आप आपका कोई आउटरीच गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपकी आउटरीच है या सपोर्ट हमारे आपके जलंधर में आपके लेवल का स्कूल है तो वो हमारी हमारे एनजीओ की मदद कर रही है। हमारे बच्चों को आते तो हमें बहुत कुछ थैंक यू। I answer this with utmost humbleness, ma'am। ये मैं चोर हूँ और ये मेरी गाड़ी में दिखता है। This is with all honesty I can accept in such a national forum that हाँ ये एक जोन है जहाँ पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है, because दिल्ली एनसीआर में एक मैंडेट है that we include students, right to education is everyone's right, and we have students coming in from all socio-economic strata irrespective of what their father's earning is. So Noida comes under Delhi NCR and we follow this like a mandate, and we would like to welcome more and more students. So we have a percentage of 25% students who are uh, persons coming from families whose economic background may not be as affluent as what the majority is, but we do have invitations, and taking it to the NGOs, why not? I'm taking this as a learning from her, because this is something that doesn't let me sleep at night as well. We'll take more questions after the next speaker. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I need to come down because I don't want to look as if, I want to be on the same level because I can't talk while I'm on the stage, and I would not want to use the mic. So then you will need to use the mic because the people, because the people are online. Okay, perfect. So let me just okay. So I'm a visual learner, so I need cue cards.
And so thank you so much. I'm really delighted to be here. Let me also put a visual timer. I come from an academic background. I'm a special educator at the American. So let me put a timer. Give me a heads up. Can you also dim the lights, please? Okay, so before we start, I think the weather is just something to be, and I think for all the individuals, especially the cold weather, we become lax and our bodies are feeling cold. So I would request all of you all, or whoever can join me for a quick warm-up session. So please stand up, whoever can join me for this session. I would request you to stand up. Thank you. And we're going to be doing Tadasana for the beginning. So if you know how it's done, then great. If not, just follow the lead. So stretch your make sure that you have enough distance between your feet. Perfect. I see people already doing Tadasana. Interlock your fingers. Lift them up. It's hard to do with them. Stretch your body and inhale while you stretch your arms and come down, relax, exhale. Do it one more time. Inhale, stretch your body, try to reach the ceiling and come down, relax. Stretch sideways. Now I'm sure. Thank you, perfect. Before you get back there, I'm sure all of you know how to spell your name, right? So I want you to lift your right hand and write your name in the air. Now, perfect. Do the same with your left hand. Perfect. Now do the same with your right elbow. It might be a little hard. Same with the left elbow. Perfect. Now do it with your bum. These are music also. We can dance. Perfect. Thank you. Sit down. And this brings me to the first that I want to start with. Can we? Yeah. Right. Yeah. Can we go to slide? Yeah. So the first thing is that children need to be in a positive learning space in order to learn. Once they feel better, they will perform better. They will do better. So it's the teacher's responsibility to make sure that you're creating a positive learning environment for the kids. And it could be a normal stretching, or it could be mindful breathing, or you have a bell that makes them alarm that, okay, this time the class is starting, or it could be anything. But make sure before you begin any lesson, the child should be in a positive learning space in order to absorb whatever you're going to bring to the table. Okay. So this is a little technical concept, so I need to explain before I get onto the strategy that we'll be talking about. Thank you, Dr. Pooja, that we've had a great session about how brain lobes work for SLD and ADHD. And one of the common features in SLD and ADHD is deficits in executive functioning. So before I start with my best practices in the field of inclusive education, I want to start with some of the things that we do to manage executive functioning, and followed by we'll be talking about different strategies. So
Executive functioning is our ability to stay focused at a task, to be present, to think before we decide something, and anybody who is good in executive skills are able to generate and manipulate ideas very quickly. For example, if I were to go back home from this seminar, I will have to think in my own in my head that the things that I will be doing. So right now, I'm going to be verbalizing everything that I'm thinking. So because of course you can't understand whatever I'm thinking, I will verbalize and vocalize everything that's going on in my head. Okay. So if I have to go back home, I think the seminar is going to be till 5:30, and because it's a weekend, I think I should take I could take an auto or because there'll be traffic, just walk because I think metro station isn't too far. And I think it'll take around 1.5 hours for me to get home. So yeah, I'll be home roughly around 7:30. So what I did right now was I created a non-verbal working memory in my head before I actually verbalized it. I had to verbalize right now so that you get an idea मैं बोल क्या रही हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ उससे आपको इसके बारे में पता चले. Otherwise, executive functioning हमेशा it always starts with non-verbal working memory, followed by verbalization or self-talk. उसके बाद हम अपने आप से बात करने लगते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा तो cause and effect relationship develop हो रहा है. For example, अगर मैं बोलूँ कि let's say मेरा math lesson है. So if I have a math lesson, what are the things that I need? I need my pencil box, I need a book. So once we have the if and then thinking. So first if let's say when we say if, we are thinking about whatever is the situation going to be about, and then it leads to an effect. So it's like if and then thinking or cause and effect thinking. So if you see the bubble, we always have a non-verbal working memory first, followed by a verbal working memory, and that is when our our cause and effect relationship develops. Before we begin explaining more about this, I want you to, any one of you, to just share what will you do after you go back? Something that you're going to do tonight. What do you plan to do tonight? Anyone? And watch a movie on Netflix. Okay, and so can you break it down into small steps? Like if you're going to go first, what do you want to do? What will you do first when you go back home? And Fortunately, I'm in my mom's place. I don't have to do anything. She will open the door. I'll go jump in the bed and open my Netflix and watch a movie. okay. So I know many of you did not notice, but did you use your hands while you were talking? Yes, I did. So when gestures are one of the mediums which tell us that the other person is thinking in their mind. So when our kids who are on the spectrum, they do not gesture. So we need to develop some kind of tool that helps them generate those ideas in their heads so that they can get better at this working memory and the skill. So we please. And this can be done by mimetic ideational information processing, a big jargon. But this basically means that you mime the idea, that you create a movie in your head and then act accordingly. So we have to create this kind of scenario for our kids with whatever disabilities that they might have, so that they can think of a picture when it's done and then move backwards and think about things that they need to do to match that picture. For example, I think I have a picture right after that. Go next.
And what I'm going to say right now might not go well with a lot of people, but checklists right now will not work. Because if you're instructing the child, oh, you know what, you need to get your iPad, you need to get your backpack, you are the one who's doing the mind mapping, and you are the one who's creating those visuals. But we need that for the child. I'm not saying the checklists do not work, but if you really want to develop the executive skills, it should be the child who is thinking about all these ideas. So instead of having a checklist, if we have a picture of a girl who's ready with a backpack to go to school, we can ask her, like, tell me what is your plan to match this picture. That will put the child into thinking that okay, I need my backpack, I need my water bottle, I need to eat my breakfast, and I have to be on time and get on the bus. So can we move on? So it can also, so in this mind mapping or thinking about how we will be making the child function or think about the ideas, we always work backwards so that we can execute forward. So first, we're going to be creating what's done. For example, if the girl wants to get ready, you'll have a picture of the girl once she is all set to go to school. Then you're going to be thinking about things that she needs to do in order to be ready and the materials that she needs so that she can execute forwards. So similarly, it could be, let's say, if you want the child to clean its desk. So you have a picture of his or her desk, which is completely clean, and then have the child think about things, brainstorm with the child that what are the things that needs to be done so that the desk looks like all clean. And then all the materials that the child would need. So can we okay. Perfect. This is another example how an instruction which is written on a let's say PPT in this form, wherein there has to be a reader, recorder, there are three people in a group, each has a responsibility of being a recorder, reporter, leader, and they have to summarize the passage. And they have to write down the ideas in word card. So this is one way of writing. And can we move on to the next slide, please? This is another way wherein we explain them, okay, this is what is expected from them. We first fill the done column, then we need to summarize. So we need one person to summarize, that'll be the recorder. And then in order to summarize what we need, so there has to be one reader and one person who will jot down the ideas. And for all these things, what are the materials that we need? We'll go into the yellow box. For example, we need a note card, pencil, and passage. So I think it's very important for when we talk about self-advocacy, it is important that everything should be child-centered, child-led. It should be the child who should be coming up with ideas, not the teacher, imposing things that this is what you need to do. So this is one of the ways that we can work with executive functioning deficits. In fact, not just that, I've like used it with a lot of people who are going to evade homework and all of that, but this has worked like really well for me. So I take a picture of them doing the work and once they've finished it, and then ask them to match the picture. Like, what do we need to do to match the picture? And without any supervision, I've seen people finishing their work instead of constantly being on, we need to finish your homework. I'm coming tomorrow, you need to finish your homework. So this is one of the ways which has worked really good for me. And another thing is make time visual. Because if you see people with deficits in executive functioning, it's really difficult for them to manage time. So it's important. So if we see a comparative, first is written it is 10 to 5, you have until 10:30 to work on your science lab, make sure you write your hypothesis and list of materials and methodology. Versus when you actually show that the clock is at 10:05 and all the shaded area, you can use a dry erase marker to color that area, which shows that you have about 25 minutes to finish this work. And then if you keep that in front of the child, he will have a sense of time.
that okay, I have 25 minutes, I need to do this much work. And what we can do is what I've done it in the past also. We can also put midpoints. Let's say you can have one midpoint between 3 and 4. So for example, the child needs to finish at least let's say 4 questions in the first segment, and then he can do the remaining in the next segment. So that will help the person or the child to manage time. And talking about management of time, my time is. We move ahead. Okay. So, okay, before I talk about the next strategy, I want you to close your eyes and I'm going to be reading out some statements and you just have to take a mental note of it and notice what you notice. So I want you to close your eyes and there will be 2 rounds and just tell me after that, how do you feel about each round? So, round 1. Do not open your mouth. Don't stand up. Don't see a pink elephant. Round 2. Close your mouth. Stand up. Think of a pink elephant. Open your eyes. What did you notice? Did anyone try to change the color of the elephant from pink to blue? What did you notice between the 2 different rounds that we did? Anybody? Yeah, so you missed the word don't. Anybody else would like to share anything or everybody done the same? Don't and things. Don't and things. Yeah, taken. So you did see a big elephant, is what you're saying. When I said don't see a big elephant. Yeah. So this is how our brain works. Our brain is not wired to process the don't language. So it's important that you tell the child what needs to be done instead of don't run. I mean, okay, run. For example, I remember I forget the movie, I forgot the movie, but the person was supposed to click on a printer and then the other one said red button and then click the red. It's like, oh, nahi dabana. So excuse me, for that first the person has to see the red button and then he has to, think as nahi dabana hai. So same thing I did in elephants. First time when the first instruction, I saw the pink elephant and then I thought, it's a nice statement. Because I think it's not very small. Our brain is wired to understand the new language and not the don't. So it's important that we use the statements in a positive way. And that brings to the second strategy that we use, which people might underestimate, but it has a huge potential. That is language as a tool. Can we move on to the next? So of course, do language instead of don't is something that I've already talked about with this activity. Can we move on to the next slide? So yes instead of no. Do you have any idea how many times does a toddler listen to the word no in a day? Any guesses? Random, any guesses? I don't like to know. I mean, how many times? Yeah, throughout the day, how many times do they hear the word no? Just random guess, okay? I mean, this 500. Somebody else? Any 15, 20. Well, you were pretty close there. It's 400 times a day. According to the Yes Big study by Daniel Siegel, he says that a toddler hears the word no 400 times a day. So probably if you have a child saying no, I don't want to do it, that's probably he's been listening or she's been listening to the word no almost throughout the day. So if you really want a child to work, you need to use the yes language. For example, if a child wants to eat snack and it's not supposed to eat, but in that case, you have to tell him, yes, you can eat your snack during snack time. Don't use the word no. I just did a mistake. Use the yes word instead of no. So, for example, another is if a child wants to draw, you can say yes, you can draw during the recess or whenever he or she has their break.
So moving on to the next is ask instead of tell. That's also one of the tools that we use. And I think for self-advocacy, it's very important that we ask the child instead of demanding things from them. If you read this example, instead of telling the child that, okay, you need to get the math lesson, what you need to say is, what do you think? What do you think you need in order to be ready for your math lesson? Because when we ask, that we put the child into the thinking mode. But when we demand things from them, it shuts their brain. Okay, moving on to the next. Okay, I'll just quickly, visuals are one of my favorites. I know there are, Howard Gardner has said there are multiple intelligences and there are the approach, all that. But I think visuals have, it has worked the best for me. So if you see on the left, we have, it's not very clear, but we have visual schedules for all our kids. Starting from one meeting, then they have community time, or the special themes, the music or art, wherever they go. And every time they're done with it, they take it out and then put it in their basket. So they know they have a routine as to this is what they have to follow and they have a structure. And if you, okay, by the way, the second one is a little different because we have kids of different age groups and different capabilities, so every tool will look different. So in the second tool, you will see there are different tasks. First is word work, second is iPad, third is math. So the child has to choose. It's important that you give the child choice instead of asking them again to do exercise thing. And then second, you see the second column, that's the different spaces that we have made for that child. It could be the egg chair, that's not very clear, but that's an egg chair, or his table, or in the calm corner. Moving on to the next. And this is also is one of our tools that we use. It's like a mini lesson plan. Let's say if you have a 30-minute session, so we say first this, then this, and next this. Again, we give options for the child to select from what she wants to do, and then if you see on the right, we also write what is coming next, so that they are better prepared for whatever is next. And every time they're done, they either strike it off or they put it on the other side of the Velcro. And moving on to the other section. Okay, this was for a child who had to keep the visual schedule in his pocket because he wanted the schedule to be with him. So we have what the class is doing, what the names are changed. So what Kim's schedule looks like, and who's the teacher, and where is that supposed to be taken place? Where is the session going to have it? Again, this is a break board. Let's say if we have free time, if they ask for a break, what they need to do. So these are some options that they can choose. I mean, lot of visual. Visual is the key. I mean, it will really help you. And then again, the chores that they can do. Moving on. Okay, these are some self-regulation tools that they can do. So different zones that they are in, they identify their feelings, and then what's missing here is we also ask them about the strategies. For example, some kid might say music helps me, or hugging pillow helps me. So along with that zone, we also write the strategies that this is what helps me, and every time you think to the child, it's getting in that zone, we remind them about the strategies to use. And this is just one of the things, how you feel and what are the tools that you can use, and once you've used, how do you feel after you've done, if you've used this tools. And that's like a break card because sometimes people just like kids want to run away. And so instead of the child feeling that he ran away or he can run away whenever he or she wants to, it's better that you give them a break card so that they know, okay, I've got a break card. It's not like I can run away whenever I want, and then you can gradually fade it. Social story, it started in 1991, and again, one of the best tools that I've seen because the rationale behind the social story was, and this was the last part, the rationale behind social stories was that children on spectrum
it was hard for them to understand social cues or just facial expressions and gestures. So basically, social story helps in a logical order. It helps kids understand the different settings that they're going to be in, and also if there's anything uncomfortable, how to deal with all that. I've also got a social story. If you allow, I can read it out. Yes, yes. You. Go ahead. Okay. Is there any a public demand? Okay. So, I'm going to be reading the cover is already there. Just understand how simply it is written and how we're reinforcing the same idea again and again, and how we're also validating other people's or other kids' emotions. Uncomfortable feelings inside of your body and brain. All people have feelings. Feelings are important. Some feelings can be on the outside of your body, and some feelings can be on the inside of your body. Some feelings can be good, and some feelings can make you uncomfortable. It is okay for children to have uncomfortable feelings. Some uncomfortable feelings happen on the outside of your body. A child might feel itchy, stingy, or pain. When a child accidentally hurts their body or feels uncomfortable, they might need a band-aid or go to the hospital. It is okay for children to have uncomfortable feelings inside their body and brain. Some uncomfortable feelings happen inside your body and brain. A child might be feeling confused, upset, sad, or disappointed, and worried or frustrated. Those feelings are called emotions. Sometimes uncomfortable emotions might make children say or do things that are not okay. When a child is feeling an uncomfortable feeling inside their body and brain, they will need to use a strategy to feel better. Some strategies children can use to feel better and be in control when they have uncomfortable feelings inside their body and brain might be take 5 deep breaths, relax, squeeze a ball, pillow, or stuffed animal, ask for a hug or a squeeze, sing a song. When our children use their strategies to feel better, their friends and teachers will feel better too. It makes everyone feel good when children use strategies to be in control. See how See how simple the language is and how we're reiterating the same idea again and again. And also acknowledging the fact that it's okay to feel frustrated and mad, but it's not okay to lash out or feel this. So I think that's moving on. If you can There are so many options we're talking in the people and like I would definitely like to learn more, but it will be time it less to learn those that we ought to have that. The question we will take later on because we are having a few more sessions. Otherwise we will lag behind. So thank you very much for the researching wonderful discussion. And some of those techniques going to be and we definitely don't need the PhDs or professors of finance and that things. We need a different kind of approach, and that is the approach which I am told you. So, we would like to learn more, but because you can cutting down this select. Yeah, yeah. Chairperson and person. Sujit ko hai. Sujit is here. Sujit is here and Sagita is here. आपने तो क्या? Hey, मैं हूँ. अच्छा, ठीक है. वो वाली शर्ट कैसे इनपे ध्यान नहीं है.
Okay. Right. Yeah. आपके यहाँ इंटर्नशिप करने आते थे आज बंगला मिल रहा है और अच्छा लग Now we have, thank you, sir. Thank you so much. We have Sangeeta ji, Sangeeta Manu. Oh, Sangeeta ji. Yeah. And we have Dr. Sujit on net. Yeah. ये वाला इसको just like Dr. Sujit Sachal is professor of psychiatry at the Institute of Psychiatry, Kolkata, and associate editor of the Division of Psychiatry. Sujit. Yes, sir. Good afternoon, sir. Hi. Am I audible? See if you have a few initial remarks. You heard the last session and the Yes, yes. Please. Am I audible, sir? Yes, yes. Yes, it'd be nice if you come a little closer to the microphone. Yeah. So basically, I feel that I welcome the speaker for this session, and I think it's Dr. Malhotra, right? And I think the topic of self-advocacy is an important thing. Actually, we as clinicians do not get much of an opportunity to teach self-advocacy, and I think this is very important, especially for children with special abilities. And I think we will get some valuable take-home points from our speaker on this issue. Over to you, ma'am. Yeah. पूरा साफ कर दिया. You use that. Thank you so much, sir. And thank you everybody for giving me this opportunity. What is self-advocacy? Self-advocacy is nothing but empowering voice. अपनी आवाज को उठाना. और अगर मैं मनोविकास की कंसर्न में बात करूं तो in मनोविकास self-advocacy movement is empowering voice of मनभावन मित्र मंडली. तो सबसे पहले मैं आपको मनभावन मित्र मंडली के बारे में थोड़ा सा बता दूं. During the COVID-19, हम सभी में से कोई भी उस दौर को नहीं भूल सकता. When we was isolated with each other. तब हम आइसोलेशन में इतना अजीब सा महसूस कर रहे थे, हमारे व्यवहार में बहुत अधिक अंतर था. तो हम अपने स्पेशल बच्चों और पर्सन से विजुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि उनके व्यवहार में कितना अंतर रहना होगा. तो इसी व्यवहार के अंतर को लेके हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान थे. So Manovika starting a joyful learning program with our experts in different areas like yoga, music, art and craft, non-cooking gas activities, and so many activities. We are experts and individuals with intellectual and development disability, or I can say all the disability, can come over the online platform and learning with the joyful activities. But gradually, this Manbhavan is not restricted with the joyful activities, but exploring their desire. They were asking about their desires, what they were asking, what they are needs, किस तरह के उन्हें सेशन चाहिए, क्या वो सीखना चाहते हैं. Then, so the Manbhavan participants started moving towards self-advocacy. And 28 individuals with intellectual and development disability on the August 2022 taken the charge of their lives by forming Manbhavan Mitra Mandali as a self-advocate group and empower them to speak about themselves and their well-being. They started their group and conducting their first meeting on 2nd of August 2022 with the motive of sharing feelings and desire with each other, supporting each other during the crisis, and engage in fun activities. इन सभी मोटिव्स के मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगी. जब भी ये लोग मिलते हैं महीने में एक बार, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं. इनका एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसपे ये लोग रेगुलर बातचीत करते हैं.
अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने डिजायर्स को शेयर करते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले जब हमारी मीटिंग हुई तो हमारी एक सेल्फ एडवोकेट ने अपनी फीलिंग्स शो की कि उसको अपना बर्थडे पूरे ग्रुप के साथ मनाना है। उन्होंने खुद से आपस में जितने भी लोग उस टाइम मेंबर्स शामिल थे उन्होंने मिलके उसके लिए बर्थडे केक मंगवाया, दे कटेड द केक, दे सेलिब्रेटेड, दे हैव फन एंड डूइंग एक्सीलेंट सेशन। उसके बाद इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि कुछ को इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग आती है और कुछ को नहीं आती है। तो उन्होंने सोचा कि जिन लोगों को आती है क्यों ना वो ऐसा इनिशिएटिव लें, ऐसा एक स्टेप उठाए कि जिनको नहीं आती क्यों ना उनके साथ मिलकर छोटा सा ट्रिप किया जाए। और जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं ये लोग मनोविकास आए और मनोविकास के पास ही बहुत ज्यादा दूर पे नहीं, पास ही में एक छोटा सा कैफेटेरिया है। और आप में से शायद कुछ लोग मनोविकास आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि यहाँ तक आते हुए भी आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि जनकपुरी की रेड लाइट कितनी हैवी रेड लाइट है। उस रेड लाइट को इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद दे टुक द ई-रिक्शा देमसेल्फ, उनको पे किया और रेस्टोरेंट में जाके दे हैड एक्सीलेंट छोला भटूरा हैविंग फन। और इतना ही नहीं, इसमें से कुछ मेंबर ऐसे भी थे जिनके पेरेंट्स नहीं मानते थे कि हम ये इंडिपेंडेंट ट्रैवलिंग करेंगे। In the time of crisis, they come up, they talk to the parents, they convince them कि अरे हम साथ में हैं ना आंटी, आप क्यों परेशान हैं? हम लेकर चले क्यों हमारे साथ घूमें? और they had excellent fun. Next slide, please. इसको बनाते हैं जिनके बारे में As I told you, they have monthly meeting. They have scheduled monthly meeting every month. I think the meetings will not only have fun, but you know, आपस में ये भी चर्चा करती है कि इनको empowerment के लिए अपने आप को सबके सामने पेश करने के लिए किन एरियाज में ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये हमारे तक आते हैं, अपने मेंटर्स तक आते हैं। We have 3 mentors in our team. Mentors तक ये डिजायर लेके आते हैं कि we need training in this program, we need training of that program, and so on. According to their need, they have attended mentor training program which was conducted by National Trust itself. And अभी कुछ ही टाइम पहले इन्होंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेके, जो कि मिस्टर टीवी धारियाल के द्वारा हमारे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि वो हमारे बीच आए और उन्होंने इन सब बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग दी। और मैं इस ट्रेनिंग का एक छोटा सा फीडबैक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी जो सर ने दिया था। सर ने पूरी वर्कशॉप के बाद जब हमने लास्ट में हम साइड के सकते बोला कि सर आप बताइए इस वर्कशॉप के बारे में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर ने हमारे से शेयर किया कि सर जब वो इस वर्कशॉप के लिए आने वाले थे तो सर के मन में भी बहुत शशुपंच था कि मैं इन बच्चों के साथ क्या बात करूंगा, ये क्या इस टॉपिक को अच्छे से समझ सके। और सर के ये रिमार्क से कि भाई मुझे तो मजा आ गया इन लोगों के साथ बातचीत करके, जितना मैं जानता हूँ शायद उतना तो नहीं बट बहुत कुछ ये लोग भी जानते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक हमारी साइड एडवोकेसी की 5 इस तरह की ट्रेनिंग्स को अटेंड कर चुकी है जो कि डिफरेंट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ गवर्नमेंट ट्रस्ट, कुछ हम लोगों के द्वारा मनोविकास के द्वारा उनको प्रोवाइड कराएंगे। Then you tell about the easy. सर आई एम कमिंग अप। Okay. आप स्लाइड से बंद कर दो। Yeah. उधर स्क्रीन पे एक मैडम पॉइंटर लगाया हुआ है आपने। नहीं हो पा रहा, डाउन करो ना, वहां से डाउन करो कंप्यूटर से बस Yeah, just scroll down. So as they are coming up with the speaking, they have been invited in national and international seminars as well. As an expert, they are invited. They are not only participated and contribute their valuable suggestions, but also participated as an expert
They have participated one international seminars, two national seminars, two national symposium, 5 training programs, and so on. Recently, they have participated as an expert in our Manpower online consultation program Manpower. And they have invited for the get-togethers. They do get-togethers, not only participated, but they also gain the public recognition in the get-togethers. Yeah, I think that the the quote Patiala is that Patiala house. Wow, these are the quote they invited our self-advocate. They said, okay, let me see that you are talking about the advocates. Are they really trained advocates? And जब वो गए तो उनका पूरा perception बदल गया कि ये पूरा अपनी बात कैसे रखते हैं. So now they are ready to take their responsibility. They took the responsibility and spread awareness about disability and on the word autism, they took the responsibility to spread awareness about the disability among the local public, or I say the common people. Some of the advocates wrote the letter to Metro that we want to ride with the Metro and know people to aware how the disabled people can move in the public transport. And fortunately, the Metro operators, they do so well with the police department. They did a Metro ride, as you can see in the picture. They start from the Kalkatuma Port Metro station and went to the IMA and went back. And public was so happy to see them in the Metro. And in between the ride, लोगों ने उनसे क्वेश्चन भी पूछे and they answer very well. कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, हम कैसे घूम रहे हैं, क्यों हमारा पर्पस है. They contributed their suggestions, their ideas so well. As I said, the empowering awareness just कुछ ही दिन पहले अभी हम लोगों ने जब वर्ल्ड डिसेबिलिटी देखा 3rd of March को पूरा एक हफ्ता वर्ल्ड डिसेबिलिटी वीक बनाया है और बहुत सारे जगह बहुत सारे कॉलेजेस में नुक्कड़ नाटक के जरिए इन्होंने अवेयरनेस को बढ़ाया. बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल, मेट्रो मॉल्स और लोकल स्टेशंस, लोकल चौराहों पर भी इन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से डिसेबिलिटी के बारे में लोगों को जागरूक किया. जैसे कि सब बता रहे थे, इन लोगों को जो हमारे सेल्फ एडवोकेट्स हैं, उन्हें लीगल अथॉरिटीज की तरफ से मासूम स्पेशल स्कूल में इनवाइट किया गया अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए. इन लोगों ने वहां जाकर स्पेशल बच्चों के साथ अपनी लाइफ की जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर किया, उनको मोटिवेट किया कि हाउ दे कम अप विद दिस सेल्फ एडवोकेसी. सो जब हम सेल्फ एडवोकेसी मूवमेंट को शुरू कर रहे थे, उससे पहले हमने कुछ थोड़ा सा रिसर्च करने की भी कोशिश की. कुछ एक आर्टिकल्स का मैं यहाँ रेफरेंस देना चाहूंगी. According to the Saha articles 2020, self-advocacy has gained recognition in India as a critical means of empowering individuals with intellectual and development disability, assert their rights, make decisions about their life. So on, as per United Nations 2006, United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability recognized the right to advocacy and participation in decision making. और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा RPWD Act 2016 जिसमें भी अब हमें इन लोगों के लिए प्रोविजंस और राइट्स दिए गए हैं. सो हम यही उम्मीद करते हैं कि दे कम अप हाई विद इन द हाइट्स इन देयर फ्यूचर, क्योंकि मेरे जो सेल्फ एडवोकेट्स हैं उन्होंने एक ही बात को अपनाया है, हौसले बुलंद हैं, छूना है आसमान, बस चाहिए एक मौका और कुछ पेरेंट्स भी मौजूद हैं. अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उनके भी एक्सपीरियंस आपके लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी. Tomorrow we will meet the self-advocate. Yeah.
Good afternoon, everyone. Good afternoon. नहीं पढ़ा आपको बनाना है, पूछना नहीं है। नहीं मैं पूछ सकता हूँ। हमको पढ़ाई देखो हमने सेल्फ एडवोकेसी सिखाया, दैट इज आई एम वेरी क्लियर। और ये सेल्फ एडवोकेसी ऐसी बात है कि कभी एक ऐसा समय आएगा कि हमारे स्टूडेंट आपसे ऐसी बात पूछेंगे कि जो आप नहीं करना चाहेंगे, जो हम सोचेंगे कि क्यों मैं इसको क्यों बोलूं या इससे मैं क्यों इसका जवाब दूं। कभी ऐसा क्षण आया कि बहुत इम्पावर हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो बात ऐसी लाकर रख दिया बच्चे ने कि ये तो मैं, अरे तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम तो ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें, ऐसा कभी क्षण आया? हेलो एवरीवन, पहले तो मैं सबका वो ऑन कर दो माइक ऑन किया। मैडम है, सर है, इन्होंने हमारे बच्चों को बहुत मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ेंगे। और ये भी है कि हमारे बच्चे हैं, जैसे बहुत कुछ सीखा उन्होंने इससे से। ये अपने आप घूमना फिरना इन्होंने सिखाया, तो देखो इनका भी अधिकार है, इनका भी अधिकार है, क्योंकि अगर हम दुनिया में आए हैं तो सबका अधिकार है जीने का। अगर इनको जो कुछ भी सिखाया जाता है वो सीखते हैं। अगर इनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, हम ये चाहते हैं कि अपने लिए लड़ना सीखें, अपने लिए हर चीज मांगना सीखें। मेरी बेटी ने तो मतलब ITI से हेल्थ साइंस का कोर्स भी किया है, अब वो BA प्रोग्राम भी कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर भी होते हैं, लेकिन हर जगह पढ़ाई लिखाई नहीं, एक्सपीरियंस भी काम आता है। क्योंकि जब हम उन बच्चों को कुछ भी करना सिखाएंगे, तो मैंने रोटी बनाना ही सिखाया है, तो उसने सीखा है ना। ऐसे ही अगर हम कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाएंगे, अगर कुछ भी उनको सिखाया जाएगा तो वो सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। अगर वो किसी ऑफिस में माना उनका अच्छा काम नहीं है, लेकिन कोई फाइलें इधर उधर दे सकते हैं, ऑफिस में जाकर कुछ भी काम कर सकते हैं, ये नहीं कि वो नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमको मोटिवेट करना होता है, उनको सिखाना होता है। अगर थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं बच्चे। थैंक यू। लेकिन मैं जरा आलोक जी के सवाल को रिफ्रेश करूं, आप दोनों को खासकर। जो आलोक जी ने बात पूछी थी वो ये कि एम्पावरमेंट, सेल्फ एडवोकेसी बहुत फले फूले, लेकिन ऐसी जो भी कोई कोशिश होती है उसमें हमेशा एक डेंजर और खतरा रहता है कि कहीं कहीं ये सेल्फ एडवोकेट सीमा तो नहीं लांग देंगे, कुछ ऐसी बात करेंगे जो हमें न जचे एज पेरेंट्स, यू नो। तो ये इसमें जरा रिफ्लेक्ट करके अगर बताएं कुछ ऐसा हुआ हो तो, या आपको ऐसा अंदेशा हो कि भी कहीं ऐसा ना बहुत एम्पावरमेंट हो जाए तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ एज पेरेंट्स? वेरी गुड, दैट्स वंडरफुल, because ये realistic issue है। See, let me say this, I can only say this in English, हिंदी में रूपांतर भी कर सकता हूँ। Empowerment of any group is almost always as a rule with real or perceived disempowerment of some other group. किसी ग्रुप की एम्पावरमेंट बिना किसी और ग्रुप के परसीव्ड डिसएम्पावरमेंट नहीं होती है। जेंडर इज द बेस्ट एग्जांपल, यू नो। तो ये जो आलोक जी ने पूछा सवाल बहुत अच्छा है, हम सबको आने वाले सालों में शायद है ना सूझने समझने के लिए। But that's wonderful. और कोई सवाल हो शायद, I don't know comment. Dr. Sujit Sachen, our chairperson is here. Are you following us? Any Yes, comments? sir. I think that was a very fruitful discussion, and I think it is this kind of work we can actually do in our own places also. I mean, maybe some kind of a crosstalk maybe we can initiate, because many of the parents of the patients that we have here, we do have a running social work department, but maybe certain cues can be taken from the good job that is being done as presented by Mrs. Sangeeta Malhotra. Kudos to your efforts and keep carrying it out.
Thank you very much. मेडिकल साइंसेस में भी दूसरे दूसरे नजरिए से ये चीज आ रही है। वहां कहा जाता है उसको इसको इसको कहा गया lived in experience. Some of you have heard. See, the professionals have what is called the technical scientific expertise. हम लोग हैं, आप हैं professionals. But the people who have gone through an experience, चाहे वो मानसिक बीमारी का हो, चाहे कैंसर का हो, चाहे हीमोफीलिया का हो, you know, any of the chronic conditions. तो मेडिकल साइंस में भी जैसे हम कल से बात कर रहे हैं, मैं एनालाइज कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये माहौल बन रहा है कि भाई सबके तजुर्बे को समझेंगे, इज्जत करेंगे, लेकिन यहाँ उसको बहुत अलग नजरिए से देखा जा रहा है। डिसेबिलिटी सेक्टर में सेल्फ एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट, तो दैट्स द सिमिलरिटी डॉक्टर सुजीत इन व्हाट यू आर सेइंग, यू नो, in psychiatry and mental health terms is becoming very important. That technical experts alone cannot know what's going on. जो व्यक्ति या परिवार बाइपोलर से, सिजोफ्रेनिया से, डिमेंशिया जैसी कंडीशन से गुजर रहे या गुजर चुके हैं, उनको अपना एक अलग तजुर्बा और वो एक्सपर्टीज बहुत काम की चीज है. It's not only the technical scientific expertise that is useful. If you combine both well, तो सबके लिए अच्छा हो सकता है. Fundamental impact. It should be fundamental. It should be a fundamental right also. अब मैं क्या बताऊं? These are the basic. There are no best where we should teach it. आप में से चाहे कोई भी नहीं थे, दो चार साथी थे, ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये अलग बात है. ये जैसे उसमें कहा नेशनल सेमिनार 06, नेशनल सेमिनार 05 में जो गांधी स्मृति में हुआ था राजघाट के पास, there like Sangeeta ji said, we actually had a full session where the self advocates actually came and spoke about what they do. पिछले साल है ना, कल भी आएंगे. कल भी आएंगे. I remember that. Thank you, sir. Dr. Sujit or anyone of you, please, anything else before your break for lunch? Anyone, even you can have any one or two. Please take the one question. मैं आप लोगों के साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगी जो बीच में स्लाइड स्किप हो गई. जैसे कि सर ने बताया, इजीली जो हमने इजीली डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इजीली डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए हैं, उसमें हमारे सेल्फ एडवोकेट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा. इसी डॉक्यूमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो इजीली डॉक्यूमेंट है जो कि इंश्योर करता है कि जो हमारे पर्सन की डिसेबिलिटी है उनको वो इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उससे अच्छे से इन्वॉल्व हो सके और उसको अच्छे से समझ सके, चाहे वो सिंबॉलिक के थ्रू हो, पिक्चर्स के थ्रू हो या जैसे भी हो. अभी रिसेंटली सर ने कुछ डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया. तो इमीडिएटली जैसे ही सर ने शेयर किया, मैंने अभी उसको नहीं पढ़ा था, तुरंत सर के ग्रुप से कमेंट करना शुरू किया, सर ये वाला पिक्चर हमें समझ नहीं आता है, और सर ने वॉइस मैसेज भेजा उसके बारे में थोड़ा सा इंग्लिश में. तो इमीडिएटली कम अप विद दी कमेंट्स, सर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजिए, हमें समझ सभी आए. सो कम अप विद देयर. I'll make one more very simply. जैसे अगर पर्सन से ब्लाइंडनेस के पास जाते हैं तो उनके पास ब्रेल है to communicate. If you go for the hearing impairment, then we do the sign language and all. If you come to the people with intellectual and developmental disability, if you want to communicate, means कि वो पूरा जो मैसेज आपने लिखा है, जो पॉलिसी आपने बनाया है, हमारे लिए ही बनाया पूरा प्रोग्राम, बट हमें तो पढ़ नहीं समझ पे समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, और दूसरी डिसेबिलिटी वाले तो थोड़ा पढ़ लिख सकते हैं, तो इनके लिए भी आसानी से जो चीज पढ़ा जाए, दैट इज कॉल्ड इजी. ओके, very nice. One please. My question is like there is some confusion in my head. Like Ms. Radhika has said that we have to work on self-regulation. So when we work on self-regulation, there are three types when we work on. When we should work personal, behavior, and environment. And before that, we need to make them understand about the emotional regulation. So how can we work on emotional regulation? Because when we work with individuals, we face a lot of challenges with emotional regulation.
how they can express their emotions, how they can express their anger, happiness, and sadness, all these emotions. So how can we do that? Yeah, I'll cut short. मैं राधिका का जो बात है that was a talk to her in lunch. Okay, and that I can tell you that she has given a very good example of self-regulation. कि हम अगर एक ग्रुप में बैठे, अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठे, एक दूसरे को जानने के लिए बैठे, जानने वाले हमारे ही तरह के लोग हैं, अगर हम वहां पर बात शेयर करेंगे तो हमारा सेल्फ रेगुलेशन बड़े आराम से हो जाता है, इमोशनल शेयरिंग हो जाता है. So that is we need to think. NKP was one example of self-regulation. अरे उसी में engage थी, उसे ठीक है. Okay, we'll take one last one. I usually work with early intervention cases. So in early intervention cases, how it's very important to tease the emotions. I usually use emotion checklists or emotion regulation. अभी early intervention का session है. Okay. You have a lot of questions that is right. Thank you so much for time जानने के लिए. सबसे पहले तो congratulations, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है. मेरा एक पॉइंट था, बहुत अच्छा लगा आपका प्रेजेंटेशन सुन के, संगीता जी पेरेंट्स का, कि हमने अपने संस्था में बार में मन की बात शुरू की. पहले एडवोकेसी का दूसरी बात है कि आपस में बातें शुरू करें. हमारे मोस्टली क्लाइंट्स नॉन वर्बल हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए कि कैसे. तो आप अगर आपको हमारा निमंत्रण है, आपका जन्म आके पंजाब आपको घुमाएंगे, गोल्डन टेम्पल के लेके जाएंगे, आपको प्लीज बहुत कुछ सीखना है आपसे. मन की बात बिल्कुल बैठे रहते हैं, कोई फोटो की कोई आउटिंग फैमिली और पार्टी के लिए बहुत बात करेंगे, और बाकी सारे नॉन एक्साइटेड हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी कोई बात भी नहीं करता, उनको नो ही सुनता है. जैसे राधे का एड्रेस को मेरे एड्रेस का ही एंजॉय. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं यहाँ पर ये सोचूंगा कि अब जो है मनोविकास के एक्सपर्ट्स को कम बुलाया जाता है, सेल्फ एडवोकेट्स को बुलाया जाता है. हमारी बात पावर इंस्ट्रूमेंट है. Our group will come to your place without parents. Okay, so then yeah. Okay. Close. Yeah, we'll break for lunch. Right. Okay. Before खड़े हो गए लोग यार. अजी मेरा चलिए आप 2 o'clock back. Yeah. So 2 o'clock. Yeah. I don't. Sangeeta ji, though she's not from disability sector trained, but by experience in that profession, she has done so well for the disability. Thank you so much. और हमारे पेरेंट्स भी इतने कोऑपरेटिव हैं कि जब बुलाओ तो ये भी आते. Thank you all. Thank you. We'll break for lunch. Please come positively by 2 so that we can leave you on time.